let me see. You need to share the screen URL, right? Yeah.
Take off the jacket. So friends, welcome to this Google Hangout. And for quite a few days, we are gearing up for Google Hangout with Adarsh Shastri Bhai. And deeply honored and pleased to see you here, Adesh Bhai. And Adesh Bhai is right now in Bay Area, meeting all our friends and sharing his experiences. And it would be a broader connection and communication with all you folks who are on Google Hangout. So as you all know, the Adarsh Bhai needs no introduction, but I'll just give a summary of what he's been involved in. Adarsh Bhai is the Parliamentary Secretary of Department of IT of Delhi government. He represents the Dwarka constituency, and many of you know all our adopt a constituency folks have worked hard during the elections as well, and he represents Dwarka constituency. A social entrepreneur involved in promotion of education and social cause. And you all know that most importantly, Adarsh Bhai has quit his high-paying job in Apple and joined this mission of Aam Aadmi Party in order to propagate the message of public solving in terms of governance and other issues. And Adarsh Bhai is the national spokesperson of Aam Aadmi Party, and he's in charge of AAP overseas in terms of strategy, fundraising, and campaign management. Let's all welcome Adarsh Bhai here. Hope all of you who are watching across the globe, Adarsh Bhai's Hangout, we have already taken questions ahead of time. We do have all those questions compiled here. We'll ask Adarsh Bhai all those questions. And also, the important aspect of this is many of us thought that across the cities we can also use this opportunity to pitch in our little bit for Aam Aadmi Party, and we can culminate together in terms of a small fundraise. Adarsh Bhai, we just want to tell you that we did some sort of a fun campaign. Aapka T2020. The cricket is a good, some fun. And today we won against Pakistan. Yeah. Today we won against Pakistan. We should use this opportunity, in this happy moment. And definitely a lot of cities become part of this campaign. And they've come forward saying that I'll hit a century, I'll hit a half century. It's a fun campaign that we ran for almost about 2 weeks. So all of you who has pitched in, who has pledged, thanks from the bottom of the heart. And let's all work together and keep this momentum going forward. I will give it to Adarsh Bhai to propagate the message of what is happening in terms of Delhi governance is all about, and also the Punjab campaign, road ahead for Punjab campaign. And you've been here in the US, the US government, the federal agencies and all have invited you, and people from 30 different countries have also culminated here. There's a lot of learning, there's a lot of good messaging that you would have heard in this process. So if you could share all the experiences and also about the Delhi government, where are we heading on, and a lot of messaging that comes through the media. There's certain things that the media doesn't bring it up. There are some important things that you would have seen sitting in Delhi. So if you could share those experiences and the road ahead for Punjab. Many of the Punjab friends are joining this whole momentum right now, and they're very charged up. So your messaging would be a broader help. Thank you so much, Adarsh Bhai. Over to you. जय हिंद साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग ने आज शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन समय निकाला यहाँ पे अमेरिका में और पूरे दुनिया में आप लोग इस हैंगआउट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को अगले आधे घंटे में जानकारी देने की कोशिश करूं कि दिल्ली में किस तरह से काम आम आदमी पार्टी आपकी सरकार कर रही है। साथ में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इलेक्शन पंजाब में होना है, उसके लिए पार्टी क्या सोच रही है, किस तरह से तैयारी कर रही है। और मैं समझता हूं क्योंकि आप लोग सब भारत के बाहर रहते हैं अधिकांश, तो ये जरूर सोचते होंगे कि बाहर रह के आप लोग किस तरह
आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ के सहयोग कर सकते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी बातचीत करूंगा। तो जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आप लोगों के बीच में आके दोबारा, और आप लोगों का कमिटमेंट और आप लोगों का सपोर्ट से मनोबल और मोटिवेशन आम आदमी पार्टी में हम लोग का सबका बहुत बढ़ता है। जैसा कि श्रीकांत जी ने बताया, मैं यहाँ पे एक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के कार्यक्रम के लिए आया था, जो प्रोग्राम लगभग 3 हफ्ते का था, जिसमें पूरे विश्व से अलग अलग कंट्रीज से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, एमपीज को, एमएलएस को, सेनेटर्स को इनवाइट किया डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने। यूएस की गवर्नमेंट फंक्शनिंग, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी किस तरह से है और सरकार किस तरह से यहाँ पे काम करती है, चाहे वो फेडरल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे सिटी लेवल पे हो, इसके बारे में जानकारी हासिल करने का मौका मिला। यहाँ की सरकार के काम करने के तरीके की अच्छाइयाँ, यहाँ की सरकार में जो बुराइयां हैं, काम करने में जो कमियां हैं, कई कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन हो कलर का, चाहे जॉब्स का, चाहे जेंडर का, चाहे करप्शन हो, इस सब के बारे में पिछले 3 हफ्ते में हम लोगों ने चर्चा करी, बात करी। और मैं ये जरूर कहूंगा कि इन 3 हफ्तों में अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसी से, डिपार्टमेंट से, पॉलिटिशियन से, गवर्नमेंट ऑफिसर्स से बात करके ये जरूर लगा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ सही है, मगर ये जरूर है कि जो गलत है उसको बदलने की नीयत रखते। और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी सीख अगर कोई भी देश को ये मिल सकती है कि अगर अपनी जगह नीयत सही हो तो काम अपने आप हो सकता है। कमी हमेशा नीयत में होती है। भारत में भी पिछले 20-25 साल की राजनीति में कमी पैसे की नहीं रही, कमी नीयत की रही, जिसके वजह से आज भारत की ये दुर्दशा है, दिल्ली की ये हालत है, पंजाब की ये हालत है। तो इस कार्यक्रम में ये सब देखने को, सुनने को, बात करने को मौका मिला, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दिल्ली वापस जाकर हम लोग कम से कम दिल्ली की सरकार में यहाँ से जो सीखी हुई बातें हैं उनको अपनाएं, और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ दिल्ली सरकार दिल्ली वालों के लिए काम कर सके, और साथ में आगे चल के आगे के राजनीतिक माहौल में भी किस तरह से इस बदलाव को लाया जा सकता है, इसके लिए आम आदमी पार्टी काम कर सके। सबसे पहले मैं थोड़ा दिल्ली के बारे में आप लोग से चर्चा करूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली में फरवरी 2015 में एक ऐतिहासिक जीत आम आदमी पार्टी को मिली, और ये ऐतिहासिक जीत के पीछे सही माने में कारण लोगों का विश्वास था। आम आदमी पार्टी ने पिछले 10-15 साल की गंदी राजनीति के वजह से जो लोगों का राजनीति पे से विश्वास उठ गया था, उस विश्वास को दोबारा कायम करने का काम किया। लोगों को ये लगने लगा कि राजनीति या पॉलिटिशियंस केवल अपना विकास या पैसा कमाने का एक रास्ता राजनीति को नहीं समझते हैं, बल्कि सही माने में समाज सेवा, सोशल सर्विस और डेवलपमेंट और विकास की बात करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने जब दिल्ली में चुनाव लड़ा तो हम लोगों ने कोई मैनिफेस्टो एक तरफा बिना संवाद के नहीं बनाया, डायलॉग के नहीं बनाया। हम लोगों ने आम जनता की राय ली, चर्चा करी, एक्सपर्ट से बात करी, पॉलिसी मेकर्स से बात करी, और दिल्ली डायलॉग के माध्यम से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़ी समस्या दिल्ली वालों को क्या है और उसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है, सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। और उसके माध्यम से हम लोगों ने चुनाव से पहले 70 पॉइंट्स का मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी ने तैयार किया, जिसके बलबूते पे दिल्ली में पार्टी ने चुनाव लड़ा। और मैं आज ये आपको बताते हुए बड़ी खुशी महसूस करता हूं कि 13 महीने लगभग सरकार को पूरे हो गए हैं दिल्ली में। 13 महीने के अंदर उन 70 वादों में से 23 वादे आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में पूरा कर चुकी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई ऐसे सरकार आप भी जानते होंगे जो 5 साल में 5 वादे भी पूरे नहीं कर पाती। उदाहरण के तौर पे सारे वादों की बात मैं चर्चा करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। 3-4 बड़ी बातें आप लोगों को जरूर बताना चाहता हूं। अगर हम लोग स्वास्थ्य की बात करें तो दिल्ली में बहुत बड़ी समस्या थी कि दिल्ली की आबादी
बहुत ज्यादा है, लगभग 2 करोड़ की आबादी है, जिसमें से लगभग 1.5 करोड़ लोग समाज के नीचे के तबके, जो गरीब तबका है, जो जो पुअर सेक्शन है, उसमें रहते हैं और अच्छी हेल्थ केयर, चिकित्सा को वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक शुरू करी दिल्ली में। मोहल्ला क्लिनिक का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ये है कि हर मोहल्ले में, हर नेबरहुड में लोगों को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए वहां पे सोल्यूशन पास में मिल सके, उनको अस्पताल, बड़े अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े, जहाँ पे 3-3, 4-4 हजार पेशेंट आते हैं और जहाँ पे कई बार 1-1, 2-2 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, तब बारी आती है। और कई बार मसले ऐसे होते हैं कि जो बीमारी का इलाज कराना है या जो जांच करानी है वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होती है। तो मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से हम लोग ने ये कोशिश करी कि दिल्ली के लोगों को दूर ना जाना पड़े और आसपास के ही अपने इलाके में उनको चिकित्सा का वो सुविधा जो है मिल सके। और हम लोगों ने अभी तक 16 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में चालू कर दी हैं और इस साल के अंदर लगभग 750 मोहल्ला क्लिनिक और चालू हो जाएंगी, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को एक ये बहुत बड़ी राहत मिलेगी स्वास्थ्य संबंधित मामलों से। साथ में ये मोहल्ला क्लिनिक केवल लगभग 15 लाख से 18 लाख रुपए की राशि में बनते हैं और इसके मुकाबले पुरानी डिस्पेंसरी जो थी लगभग 15 करोड़ रुपए में बनती थी। तो आप ये सोच सकते हैं कि ईमानदारी से अगर काम किया जाए तो 15 करोड़ का काम 15 लाख में भी हो रहा है और कहीं ज्यादा सुविधाएं दिल्ली वासियों को मिल रही हैं, जिससे वो क्लिनिक्स में जाके अपना इलाज करा सकते हैं। अगर मैं बात शिक्षा की करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने लगभग 1100 स्कूल दिल्ली में चल रहे हैं। उन स्कूल में सबसे बड़ी समस्या सरकार बनने से पहले वहां के अध्यापक, वहां के टीचर्स की एब्सेंटिज्म था। टीचर्स क्लास में आते नहीं थे पढ़ाने। वहां पे हम लोग ने सीसीटीवी लगाए हैं और जो नॉन टीचिंग जिम्मेदारियां हैं टीचर्स की, प्रिंसिपल की, उनको उससे अलग करा। हम लोगों ने बोला कि अध्यापक का या प्रधानाचार्य का, प्रिंसिपल का काम पढ़ाना है, बच्चों का भविष्य बनाना है, तो वो उसमें ध्यान दें। और उसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के स्कूल में अध्यापकों की अटेंडेंस 55% के आसपास होती थी। नवंबर दिसंबर पिछले साल के महीने में वो बढ़ के 90% के ऊपर हो गई है, जो देश के सभी प्रांतों में सबसे ऊपर है। तो एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ में दिल्ली सरकार ने ये भी निर्णय लिया था कि जो बच्चे होनहार हैं मगर आर्थिक स्तर से परिवार कमजोर है, बच्चे आगे पढ़ नहीं पाते हैं, उनको एक एजुकेशन गारंटी सरकार देगी। और ये कार्यक्रम, ये योजना 4 महीने पहले शुरू हुई है और इसके माध्यम से लगभग 750 बच्चों को इसका, और दिल्ली सरकार की एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हैं और उम्मीद है, हम लोग यही करते हैं कि पढ़ने के बाद वो लोग दिल्ली को, देश को एक अच्छा समाज बनाने में अपनी मदद करेंगे, योगदान देंगे। इस तरह की कई बातें और हैं। पानी की, बिजली की अगर मैं बात करूं तो जब सीएजी का ऑडिट हुआ, उसके बाद जब मालूम पड़ा कि बिजली के दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये 7 साल में पहली बार हुआ, बिजली प्राइवेटाइज होने के बाद दिल्ली में, कि बिजली कंपनियों ने 1% भी बिजली के दाम नहीं बढ़ाए, मगर उसके बाद भी मुनाफा उतना ही कमा रहे हैं। तो ये बात साफ हो गई कि मुनाफा कमा रहे हैं और बिजली के दाम बनाए बगैर ईमानदारी से काम किया जा सकता है। साथ में पानी की मैं बात करूं तो 20,000 लीटर पानी हम लोग ने जब मुफ्त दिया दिल्ली की गरीब जनता को, तो बड़ी आलोचना हुई, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ इस बात का कि ये सब्सिडी का मॉडल है और ये मॉडल नहीं चलेगा, ये मॉडल तो हर सरकार लाती है मगर ये फेल हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईमानदारी से जो दिल्ली की पानी सप्लाई की कंपनी है, जो दिल्ली जल बोर्ड है, ईमानदारी के साथ अगर काम कर रही है पिछले 1-1.25 साल से, तो पहली बार हुआ है 22 साल में कि 20,000 लीटर पानी मुफ्त देने के बाद भी लगभग 37 करोड़ रुपए एडिशनल प्रॉफिट दिल्ली जल बोर्ड ने कमाया। तो आप ये देख सकते हैं कि ईमानदारी से काम जब हो रहा है तो उसके बाद गरीब लोगों को, गरीब तबके को मदद करने के मुनाफा पहले से ज्यादा है। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली में नए प्रोजेक्ट, फ्लाईओवर वगैरह बने। हाल में 1 साल में 3 बड़े फ्लाईओवर
जिसमें 4-4, 6-6 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर बने हैं। और आपने ये जरूर सुना होगा आज तक कि 1000 करोड़ का काम 1500 करोड़ में हुआ, 2000 करोड़ में हुआ, 2500 करोड़ में हुआ। ये पहली बार हुआ है कि ये 1000 करोड़ का काम 1500 या 2000 करोड़ में नहीं, 800 करोड़ में पूरा हो गया। समय से पहले पूरा हो गया और कम पैसे में पूरा हो गया। तो ये ईमानदारी का नतीजा है कि दिल्ली सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और ये इस बात पे नजर रखती है कि कोई भी ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी अफसर किसी भी तरह की बेईमानी ना करे। और ये जो 200 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के बचे, दिल्ली सरकार ने अपने सरकारी खजाने में नहीं जमा करे। दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया कि ये 200 करोड़ रुपए से 1 फरवरी 2016 को दिल्ली के जितने भी अस्पताल और जितनी भी डिस्पेंसरी है वहां से दवाई। तो मैं आपको उदाहरण ये देना चाहता हूँ, ये दे रहा हूं कि पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच, ईमानदारी की सोच से कितना फर्क पड़ सकता है कि प्रोजेक्ट तो कम में हुआ ही, जो पैसा बचा आज उस पैसे से मुफ्त दवाइयां दिल्ली सरकार के अस्पताल और डिस्पेंसरी से गरीबों में दी जा रही है। तो सही माने में सामाजिक न्याय और समानता का ये काम दिल्ली सरकार कर रही है। और भी इस तरह के कई ऐसे काम हैं जो दिल्ली सरकार कर रही है। हम लोग वाईफाई, एक बहुत बड़ा वायदा था दिल्ली सरकार का कि दिल्ली की जनता को पब्लिक वाईफाई फ्री देंगे, क्योंकि वाईफाई केवल इंटरनेट का एक एक्सेस नहीं है, एक अवसर प्रदान करने का एक मौका है। आज की युवा पीढ़ी को इंटरनेट के माध्यम से नए अवसर मिल सकते हैं, नए सोच मिल सकती है और ज्यादा से ज्यादा लोग इस पूरे विश्व से एक साथ जुड़ सकते हैं। इस पे काम चल रहा है और इस जून जुलाई के महीने में पहले चरण में, फर्स्ट फेज में, हम लोग स्कूल, कॉलेज, अस्पताल वगैरह में वाईफाई शुरू कर देंगे और अगले 2-2.5 साल में मैं उम्मीद करता हूँ पूरे दिल्ली में वाईफाई पहुंचा दिया जाएगा और हर नागरिक इसकी सुविधा ले पाएगा। तो जैसे मैंने कहा, इस तरह के कई काम दिल्ली में हो रहे हैं, चल रहे हैं बहुत तेजी से। और इसके अलावा करप्शन, बेईमानी बहुत कम हो गई है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि खत्म हो गई है, मगर कम हो गई है। आप लोग सब जानते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो दिल्ली सरकार बनी, जब दिल्ली जब प्रदेश बना 1992 में, 1992 में, तब से लेकर अभी तक वो दिल्ली सरकार के अधीन होता था, दिल्ली सरकार के अंडर होता था। मगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले साल एंटी करप्शन ब्यूरो को दिल्ली सरकार से हटाकर एलजी के अंडर में कर दिया। उसके बावजूद भी हम लोग ने अपने विजिलेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से कई ऐसे केसेस पकड़े हैं भ्रष्टाचार के, और सख्त से सख्त कार्रवाई उन अफसरों पे की गई है जिससे ईमानदारी, इस समय ईमानदारी से लोग काम कर रहे हैं और बेईमानी से लोग डर रहे हैं। साथ में जो व्यापार है दिल्ली का, व्यापार के लिए हम लोग ने कई बातें करी हैं। हम लोग ने रेड फ्री सिस्टम लागू कर दिया है, जहां पे पहले कोई भी अगर अपना कारोबार, अपना व्यापार दिल्ली में करता था तो उसको कोई फॉर्म पे टैक्स जमा करना पड़ता था और उसकी तहकीकात डिपार्टमेंट करता था। पिछले बजट में मनीष सिसोदिया जी ने ये निर्णय लिया और घोषणा करी कि अब ये काम आगे से नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ डिक्लेरेशन के माध्यम से अब हर कोई व्यापारी दिल्ली में टैक्स जमा कर सकता है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन पिछले फाइनेंशियल ईयर में, आर्थिक साल में हुआ है। और जहां पे लगभग 17,000 करोड़ रुपए, लगभग $3 बिलियन अप्रोक्सीमेटली इकट्ठा हुआ, जो कि अपने आप में पहली बार दिल्ली में एक मिसाल है। एक और बात दिल्ली की मैं अंत में रखूं, इससे पहले मैं पंजाब और बाकी देश के बारे में बात करूं। हम लोग के लिए, सबके लिए स्वराज एक बहुत बड़ी बात थी और स्वराज को लेके आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और स्वराज के पहले चरण को लागू करने के लिए मोहल्ला सभा, मोहल्ला बजट का काम शुरू किया गया और दिल्ली की 70 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में से 11 विधानसभाओं में एक्सपेरिमेंट और प्रयोग के तौर पे इस काम को शुरू किया गया, और जिसमें सही माने में लोग निर्णय कर रहे हैं कि वहां पे किस तरह का विकास होना चाहिए। द्वारका, जो मेरी विधानसभा है, वहां पे भी एक्सपेरिमेंट किया गया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब लोगों को, आम जनता को ये बोला गया कि आप लोग इस मीटिंग में आइए
और वहां पे चर्चा करिए कि किस तरह से आप लोगों को क्या काम अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में, अपने कॉलोनी में कराना है, तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। उसके बाद भी लोग आए, लोगों ने वहां पे अपनी अपनी प्राथमिकता के हिसाब से बताया कि क्या क्या काम करना है। कहीं पे सड़क डलनी है, कहीं पे सीवर पड़नी है, कहीं पे पानी की कोई समस्या है, कहीं पे लाइब्रेरी बननी है, कहीं पे ओल्ड एज होम बनना है। और इन सब बातों के ऊपर उसके बाद उन्हीं सब नागरिकों ने वोटिंग करी। उसमें सरकार की प्रणाली का कोई योगदान नहीं था, ना विधायक का, एमएलए का, ना गवर्नमेंट ऑफिसर्स का। लोगों ने उस पर वोटिंग करी, प्राथमिकता प्रायोरिटी तय करी और निर्णय लिया कि ये काम हमें करवाने हैं। और आज उसका नतीजा ये है कि उन सब इलाकों में जो लोगों ने निर्णय लिया था कि ये काम उनको कराना है, वो सारे काम विकास के हो रहे हैं। लोगों को सही माने में आज लग रहा है कि सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जरूर हो सकती है, मगर सरकार चलाने वाले लोग दिल्ली की आम जनता है। तो सही माने में स्वराज का असली मतलब यही है कि लोग खुद से तय कर सके कि किस तरह की जिंदगी वो लोग आगे जीना चाहते हैं, किस तरह का काम करवाना चाहते हैं। तो इस तरह के बहुत काम चल रहे हैं। और जैसे मैंने बोला, अगर मैं सारे काम की चर्चा करूं तो समय बहुत लग जाएगा, मगर मैंने सोचा कि कुछ बातें जरूरी हैं आप लोगों को बताना, क्योंकि मीडिया के माध्यम से कई ऐसी बातों की जानकारी आप लोग सब तक नहीं पहुंच पाती। आगे अगर मैं थोड़ी चर्चा आप लोग से पंजाब की करूं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस समय पंजाब एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी पंजाब में एक इस तरह की क्रांति, एक इस तरह की इनकलाब की लहर देख रही है जो अभूतपूर्व है, अनप्रेसिडेंटेड है। और हम लोग ऐसा मानते हैं कि आप लोग के सहयोग के साथ जो चमत्कार, जो करिश्मा दिल्ली में हुआ, पंजाब में 2017 जनवरी में उससे भी बड़ा करिश्मा हम लोग देखेंगे। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत बड़ी जीत पंजाब की जनता को मिलेगी और पंजाब की जनता और आम आदमी पार्टी एक नए पंजाब के निर्माण का काम शुरू करेंगे। हम लोग अगर पंजाब की बात करें तो बड़ा अफसोस होता है कि पंजाब पिछले 15-20 साल की गंदी और भ्रष्ट राजनीति का शिकार हुआ है। पंजाब वो प्रदेश है जो आजादी से पहले जब देश में इनकलाब की लहर चल रही थी तो पंजाब का नाम सबसे ऊपर होता था। पंजाब वो प्रदेश है जब सीमा पे सुरक्षा की बात होती थी तो पंजाब के जवानों की बात होती थी। पंजाब वो प्रदेश है जब देश में देश के लोगों के पेट के भरने की बात होती थी तो पंजाब का किसान उस अन्न को पैदा करता था। अगर व्यापार की बात होती थी तो पंजाब में व्यापारी पूरे देश भर में जाने जाते थे, विख्यात थे, और व्यापार पंजाब से लेके आगे बढ़ता था। कोई भी बदलाव अगर भारत में हुआ है, कोई भी नई सोच अगर भारत में आई है, चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह हो और चाहे वो उसके बाद की इतिहास को आप देख लें, तो पंजाब हमेशा सबसे आगे रहा है। पंजाब उस सुनहरा प्रदेश रहा है जिसका योगदान भारत के निर्माण में बहुत बड़ा रहा। मगर अफसोस ये है कि पिछले 15 साल 20 साल से ये जो राजनीति हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो अकालियों की हो चाहे कांग्रेसियों की हो, उस राजनीति में विकास हुआ, मगर वो विकास केवल उन्हीं पॉलिटिशियंस का, उन्हीं राजनीतिक लोगों का हुआ, पंजाब का नहीं हुआ। इन लोगों ने अपनी जेबें भर ली, इन लोगों ने अपना पैसा कमा लिया, मगर पंजाब को पीछे छोड़ दिया। आज समय ये आ गया है कि पंजाब उस बड़े बदलाव की तरफ, उस बड़े क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। आज पंजाब में किसान सुसाइड कर रहा है। आज पंजाब के नौजवान, एक पूरी पीढ़ी नशे के शिकंजे में है, नशे में ग्रस्त है। आज पंजाब का व्यापार खत्म हो चुका है। पंजाब बुरी तरह से एक डेट, एक कर्जे के कागार पे खड़ा है, जहां पे सरकार को जमीन अपनी सरकारी बेचनी पड़ रही है लोगों की तनख्वाह देने के लिए। पंजाब की इस हालत की जिम्मेदार, हालांकि कांग्रेस और अकाली पार्टी तो अलग है, मगर उन दोनों पार्टी का उद्देश्य पंजाब को खोखला करना रहा है। और ये समय आ गया है कि हम लोग सब मिलकर इस पंजाब में इस गंदी राजनीति को उठा के बाहर फेंकें। मैं जनवरी में मुक्तसर साहब में मागी मेले में गया, जहां पे अरविंद जी की रैली थी।
और वहां पे मेरी चर्चा कई मीडिया वालों से हुई, कई लोगों से हुई, और सबने यही कहा कि अपने पूरे जीवन में इन्होंने इतनी बड़ी हुजूम, इतनी बड़ी भीड़ लोगों की नहीं देखी। कम से कम 5-5.5 लाख लोग वहां पे आए थे, और वो लोग इसलिए नहीं आए थे क्योंकि वो आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल को सुनना चाहते थे, वो इसलिए आए थे क्योंकि पंजाब में वो वही ईमानदारी और वही बदलाव चाहते हैं जो वो दिल्ली में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आज अगर हम लोग बात करें तो पंजाब में हम लोगों को इस तरह की साफ सुथरी राजनीति की जरूरत है। पंजाब में नए साफ चेहरों की जरूरत है। पंजाब में ऐसे लोगों की जरूरत है जो देश से और पंजाब से प्यार पहले करते हो, जो पंजाब और देश के लिए पहले सोचते हो। ऐसे लोगों के साथ मिलके आम आदमी पार्टी पंजाब जोड़ो का कार्यक्रम चला रही है, जहां पे हर गांव से, हर पिंड से लोग बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, और ये निर्णय कर रहे हैं, ये निर्णय ले रहे हैं, ये तय कर रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर पंजाब का भविष्य, पंजाब की तकदीर को बदलेंगे। हम लोग पंजाब में मजबूती से काम कर रहे हैं। आप लोग का सहयोग, आप लोगों का योगदान इस लड़ाई में बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे हैं, आप लोग ये समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है पंजाब को वापस उसी जगह पे ले जाना जहां पे पंजाब हमेशा पहले से था। अगर मैं बात करूं आप लोग के अपने योगदान की, क्योंकि मैं कई जगह जाता हूं, मुझसे ये पूछते हैं लोग कि हम लोग यहाँ पे रह के क्या कर सकते हैं, पार्टी की कैसे मदद कर सकते हैं, पंजाब की कैसे मदद कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने पंजाब के लिए एक नया स्ट्रक्चर पार्टी का तैयार किया है, जो यहाँ अमेरिका में और अलग अलग देशों में तैयार किया जा रहा है। उस पार्टी के स्ट्रक्चर से आप लोग जुड़ सकते हैं। जो समय दे सकता है समय दे, जो समय नहीं दे सकता है मगर बातचीत कर सकता है, चर्चा कर सकता है, वो करे। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि पंजाब के लिए हम लोग दिल्ली की तरह ही एक संवाद, एक पंजाब डायलॉग का कार्यक्रम शुरू करेंगे जुलाई के महीने से, और पंजाब में रहने वाले लोग और पंजाब से जुड़े हुए लोगों से रायशुमारी लेकर, राय लेके, सुझाव लेके हम लोग पंजाब का मैनिफेस्टो तैयार करेंगे कि पंजाब भी जो घोर समस्याओं से घिरा हुआ है, इनसे पंजाब को कैसे निवारण, कैसे इससे समाधान दिलाया जाए और कैसे इन मुसीबतों से बाहर निकला जाए। साथ में मैं आज आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है कि चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आती है तो पहली बार एक एनआरआई डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाएगा, बनाया जाएगा, जिसके लिए एक पूरा मंत्री को जिम्मेदारी दी जाएगी। और उस डिपार्टमेंट और मंत्री की जिम्मेदारी ये होगी कि पंजाब से संबंधित लोग, पंजाब से संबंधित समस्याओं को लेकर अगर आते हैं, चाहे वो उनकी जमीन की समस्या हो, चाहे वो पंजाब में कोई उनके मित्र या उनके किसी रिश्तेदार की कोई समस्या हो, तो उसके निवारण के लिए जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सके, इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट तैयार किया जाएगा। और उस डिपार्टमेंट का नेतृत्व एक सीनियर नेता, सीनियर लीडर पार्टी का मिनिस्टर होगा जो इसको करेगा। तो एक बहुत बड़ी नई सोच है, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि जब तक हर किसी को हम लोग इसमें साथ लेके ना चले, तब तक कोई भी काम आगे नहीं किया जा सकता। एक बात और मैं आप लोगों से पंजाब के लिए करना चाहता हूं। आप लोग सब अमेरिका में और विश्व भर में अलग अलग जगह आके रहते हैं, बसे। आप लोग ने पंजाब, आप लोग ने अपना देश जरूर छोड़ के आके यहाँ बसे, मगर आप लोगों का दिल आज भी पंजाब में है, आप लोगों का दिल आज भी भारत में। और आप लोग यहाँ पर जब आए, आप लोग ने एक नई जिंदगी की शुरुआत करी। आप लोग यहाँ पे आके एक सफल जिंदगी अपनी बनाई, समाज में एक अपनी पोजीशन बनाई, और उसका नतीजा ये है कि आप लोग अगर अपने दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से गांव में, शहर में बात करेंगे तो उस बात का वजन कहीं ज्यादा है अगर हम उसको कंपेयर करें, अगर आम आदमी पार्टी के कोई नेता या आम आदमी पार्टी का कोई वॉलंटियर वहां पे बात करे। आप लोग यहाँ पे आके अपनी जिंदगी को सफल बनाया, और उसकी वजह से आप लोग की बात वहां कहीं ज्यादा सुनी जाएगी मुकाबले
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या आम आदमी पार्टी के नेता। तो ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान आप लोग का होगा कि पंजाब में, समाज में, वहां पे चर्चा करें, बातचीत करें और कोशिश करें कि आम आदमी पार्टी पंजाब को किस तरह बदल सकती है या बदलेगी, इसकी बातचीत हो, चर्चा हो, जिससे कि वहां पे लोगों में और ज्यादा जागरूकता बढ़े। पंजाब एक अलग तरह का चुनाव होगा। पंजाब में किसान है, पंजाब में गांव है, पंजाब में हम लोगों को वो सारी बातें करनी पड़ेगी और उन सब बातों के लिए किसी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण रोल आप लोग निभा सकते हैं, क्योंकि आप लोग वहां की मिट्टी से जुड़े हैं, वहां की खुशबू से जुड़े हैं। इसके लिए हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्ट्रक्चर अमेरिका में भी बना रहे हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर अगले 1 महीने में तैयार हो जाएगा। आप लोग उस स्ट्रक्चर के माध्यम से जुड़े और बात करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी मैं हाल में इंग्लैंड में था, ऑस्ट्रेलिया में था और अमेरिका के भी कुछ और शहरों में था और मैं कई जगह गुरुद्वारों में गया और मुझे गुरुद्वारों की प्रबंधक कमेटी के मेंबरों ने बताया कि यहाँ पे कांग्रेस वाले भी आए, अकाली वाले भी आए, मगर उनको गुरुद्वारे के गेट के बाहर से ही भगा दिया गया। और उनको इसलिए भगा दिया गया क्योंकि इस समय पंजाब से संबंधित हर कोई इन पार्टियों से बुरी तरह थक चुका है। वो जान चुका है कि ये पार्टियां दो अलग जो है, अलग जरूर हो सकती हैं, मगर इनकी नीयत दोनों की उतनी खराब। और हम लोगों को बुला के बोला गया कि आप लोग आके चर्चा करिए, बातचीत करिए। तो ये बहुत बड़ा सम्मान आम आदमी पार्टी के सभी लोगों को मिला कि गुरुद्वारे के अंदर आकर लोगों से बात करने का मौका दिया, हम लोग को आमंत्रित किया गया। तो इस तरह की सारी बातें, ये सारी चर्चा इस बात की तरफ हम लोगों को ले जाती है कि पंजाब इस समय बहुत बड़ा बदलाव चाह रहा है और इस बदलाव में सबसे आगे वहां के युवा खड़े हैं, क्योंकि वो युवा पीढ़ी उस गंदी राजनीति, उस बेईमानी की राजनीति से कोई मतलब नहीं रखना चाहती। उस युवा पीढ़ी को एक अच्छे भविष्य का निर्माण करना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। उसको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, आर्थिक मजबूती चाहिए। और इस सब के लिए उस युवा पीढ़ी को आज यकीन हो गया है कि आम आदमी पार्टी एक सही विकल्प है। मैं अंत में एक बार फिर आप लोग को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने समय निकाल के यहाँ पे बातचीत और मेरी बात सुनने का आप लोगों ने समय निकाला। और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग इसी तरह पंजाब की मदद करते रहेंगे। अंत में मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूंगा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था पंजाब की मिट्टी से। आज उस किसान और जवान दोनों की जय करने का समय है और हम लोग को याद करने का समय है कि चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति रही हो, चाहे वो व्हाइट रेवोल्यूशन, मिल्क रेवोल्यूशन रहा हो, सब में पंजाब आगे रहा है और उसी पंजाब को हम लोग को दोबारा आगे ले जाना है। आगे चल के जब इतिहास लिखा जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां ये सवाल आप लोग से जरूर पूछेंगी कि जब पंजाब दूसरा इनकलाब और दूसरी क्रांति की तरफ बढ़ रहा था तो उस क्रांति में आप लोग हिस्सेदार थे कि आप लोग सो रहे थे? इसका जवाब आपको, मुझे या अपने आप को नहीं देना पड़ेगा, इसका जवाब आपको आने वाली पीढ़ियों को देना पड़ेगा। तो अपनी अंतरात्मा से ये सवाल पूछिए और इस कड़ी लंबी लड़ाई में आम आदमी पार्टी का समर्थन कीजिए, मदद कीजिए, क्योंकि आप ये मदद आम आदमी पार्टी की नहीं करेंगे, ये आप मदद पंजाब की और पंजाब के भविष्य की और पंजाब के आगे आने वाली पीढ़ियों की करेंगे। एक बार फिर मुझे सुनने के लिए, यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूँ समर्थन आप लोग से आगे भी मिलता रहेगा। जय हिंद। Thank you so much, Adarsh bhai. You've almost covered, what is happening in Delhi and also in Punjab, Right. and you've shared some good experiences of going around different cities as well. So we have some of our friends right now Sure. going on donate.aamadmiparty.org, Right. and then they're doing active donations. Okay. Sham Panjwani, Madhu Raju, Avtar Singh Dhillon, Pulkit Gupta, Akil Gada, Himalay Majumdar,
Vinod Kumar Pillai, Sadbir Singh, Prabhat Sharma, Sanjeev Verma, and few of them are having issues with the donate site Okay. in terms of transactions that are failing because of their credit card issues or whatever it is. Santosh Adagula just mentioned it has failed for him. But thank you so much for all of these people, and keep it coming, friends. We can all together hold it tight and then make this happen. And Adarsh bhai, we do have a bunch of questions, and many Sure. of our friends have been. Uh, we ran this campaign for about 2 weeks, and Okay. a bunch of friends have basically put in some questions. And I'll run through those questions if you Sure. can just Of go course. through. Of course. So we have Pulakit Gupta, who has asked some questions here. This is about real-time bus timing. Um, Adarsh bhai, I spoke to Satyendra ji while in Delhi 2 months back about this. I'm not sure what is being done. Issue is that when you get out of the metro or regular train on bus stops, there is no schedules displayed. Only route numbers are displayed. No app by which someone can check real-time status. So work done to promote public transportation is going futile. While on my two-week stay in Delhi, I tried to use as much as public transportation as possible, but without bus availability confirmation, we shun away from that and take personal vehicle and Uber. In fact, I found on most of the routes, buses are not even half filled as no one knows when next bus is coming. You'll see here every city has real-time apps, and it is not hard as you're already putting GPS on buses. So what is it possible that this can be taken up with Satyendra Jain, wherein we give active timings of the buses in Delhi? That is one thing Pulkit is asking. If you can go ahead with Sure. that. So thank you, Pulkit, for your question. It is interesting that you mentioned this, and let me tell you that we are, my ministry. I look after technology and technology for anything to do with the government of Delhi as well as information technology. So we are working on a mechanism and on an app to integrate the bus routes. The problem is that the buses which have GPS is still very few. Out of the total 5,600 buses which are there in Delhi, currently less than 800 buses have a GPS system. And as you know, without a GPS, there cannot be any real-time information of the bus arrival times or the bus location specifics. Uh, Over the period of next 6 to 8 months, more and more buses will be GPS enabled. Plus, we are ensuring that all new bus purchases come with GPS. Once that system is in place, DIMS, which is the Information Technology Department of the Transport, is working on an app based solution. And actually, this app solution already exists in many countries in the world, many cities in the world, on a solution which will allow people to download an app for free on their phone, and through that they will be able to get real time information of bus routes, bus locations, and bus arrival times. But bear with us for about 6 to 8 months before we have the buses GPS enabled. And I think after that, I'm hoping that before the end of this year, this will be a problem of the past, and Delhi will be the first city in India to have GPS enabled real time solutions for buses. Thank you so much, Adarsh bhai. Adarsh bhai, just right now it's happening. Rajesh Singh, Jashwant Mutiala, and Sushil Tiwari from the US across the cities. It's hard to find cities here Okay. are donating, and I've got a couple of requests saying uh, uh, about the donations. Friends, there is one route. It is only one route. It is donate.amadmiparty.org. I've seen new friends from Punjab who are asking this question. There's only one route. It is donate.amadmiparty.org. You can go do it right away. And Pulkit as well has got a second question, Adarsh bhai, Sure. and it is about tourism. Adarsh bhai, I realized that there is no effort done to promote Delhi local tourism. Outside major stations, bus stands, and airports, you can create booths, as you can see in all the cities in US, that can provide genuine tourist information and will help generate employment easily. These can be connected by local tourist organizations like DelhiHeritageWalks.com, which helps explore local Delhi. Thank you so much, Adarsh bhai. So thank you, Pulkit, once again. I think that's a phenomenal suggestion.
And though tourism is important for us in Delhi, and we are trying to promote it in the form of creating many more cultural events and cultural areas where we can work on, like the heritage walk that you just spoke about. But I think it's a great idea, at least at the airports and the railway stations and the interstate bus terminals, we can have multiple kiosks for Delhi tourism, which will not only just provide information, but which can also provide solutions in terms of hotel bookings and the best places to visit, depending on what your interests are. Whether it's a cultural thing, it's a historical thing, it's a social thing. So we it's a great idea, and of course easy to implement. And I will take this feedback back to Delhi and hope to get back to you with something on this. This is certainly interesting. We'll do it. Thank you. Adarsh bhai, we have Lakveer Singh from Buffalo, New York. Adarsh bhai, I have some suggestions. I want to directly relay it to you. How do I do this? So, well, you can certainly go and send emails on the official Aam Aadmi Party overseas website. And I think Shrikant would be able to help you with the contacts for the US Aam Aadmi Party website and the Twitter and the Facebook page and the phone numbers. Apart from that, you can send in a mail to aapoverseas.org, appoverseas.org, and which is the quickest way to get a mail across. But of course, you are more than welcome to write to me. Sometimes there's a long queue of emails, so I may be a little slow in responding, but you're welcome to write to me. And my email ID is MLA, that's MLA, Member of the Legislative Assembly, MLA Adarsh Shastri, all of this together at gmail.com. MLA Adarsh Shastri at gmail.com. Thank you. And we have Barinder Yes Ahluwalia. He's from Punjab and living in United States. I'm wishing AAP all the best. And he says that for Punjab, AAP is the hope. So thank you, Barinder Paji, for your wishes. We have Ritesh Chauhan. His question is, how will you manage political discussion while visiting your father, Sri Anil Shastri ji, as he's from Congress and might have different views on different topics? And how tough is it to carry the legacy of Lal Bahadur Shastri ji, and what kind of impact he's got on your life as a grandson? Well, thank you for that question. It's a little bit out of syllabus, considering, but anyway, but I let me put it to you this way, that when I quit my job at Apple and I joined the Aam Aadmi Party, I was asked this question at home as well. And I had only two things to say, to my father, who's in the Congress. And I told him that, it is because of the Aam Aadmi Party that people like us, people like me, and young people can join politics. If 3 years back I would have told you that I want to enter politics, you would have told me to go and show myself to a psychiatrist. So the Aam Aadmi Party has provided a platform to people with the right intentions and honest intentions, with hope to be able to do something for the country. So that is one. And of course, I did, of course, tell him that in case my grandfather Lal Bahadur Shastri would have been alive today, I am pretty sure he would have left the Congress party and been with the Aam Aadmi Party. My goodness. All right, Paji. So now we have, I forgot to mention, Barvinder Ahluwalia is from San Jose, California. And we have Sham Panjwani from Houston, Texas. He's asking, Adarsh bhai, what is the status of rolling out Wi-Fi in Delhi? Okay. So I think I mentioned it during my talk earlier, but like I said, it's a phase-wise implementation. This year, by July, we will have implementation in schools, colleges, and hospitals. And in the next 2 years, we'll have coverage over the entire city. Perfect. So we do have Harbinder Hanwar from Middlesbrough Heights, Ohio. Adarshji, who will be our Punjab CM candidate? So, सत श्री अकाल जी, हरविंदर जी, आपका सवाल जहां मैं जाता हूं सबसे ज्यादा पूछा जाता है हर जगह, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक सोच है आम आदमी पार्टी में, डेमोक्रेटिक सोच है, और हम लोगों ने
पार्टी ने निर्णय नहीं लिया है कि पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा पंजाब में कौन होगा। जैसा कि संविधान में लिखा है, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो भी पार्टी चुन के, जब हम लोग की पार्टी आम आदमी पार्टी चुन के वहां पे आएगी, तो जो चुने हुए एमएलए होंगे, जो चुने हुए विधायक होंगे, उनकी बैठक होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि उनका नेतृत्व, उनका लीडरशिप कौन करेगा। और ये निर्णय तब लिया जाएगा। मगर अगर ऐसा कुछ निर्णय पार्टी लेती है कि कैंडिडेट पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए पहले डिक्लेयर किया जाए, तो आप लोग को सबको जानकारी दी जाएगी। और ये निर्णय अभी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मैं नहीं समझता ये निर्णय लेना अभी आज जरूरी है। भारत के और हर प्रदेश के लोकतांत्रिक सिस्टम में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि चुनाव एक चेहरे के नाम पे हो। चुनाव मुद्दों पे होता है, इश्यूज पे होता है, और चुनाव विचारधारा पे, आइडियोलॉजी पे होता है। आज ईमानदारी की विचारधारा, ईमानदारी की आइडियोलॉजी और करप्शन खत्म करने की आइडियोलॉजी पे चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही है। ये पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है। पंजाब जो पूरी तरह से आज खोखला हो चुका है, उसको दोबारा वही जगह पहुंचाने, सुनहरी जगह पहुंचाना हम लोग का सबका लक्ष्य है। और उन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव लड़ने के बाद इस पे निर्णय लिया जाएगा, और अगर निर्णय पहले लिया गया तो आप लोगों को सबको इसकी जानकारी दी जाएगी। अभी इसके बारे में पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया है। Right, Adesh bhai, just now Jayesh Mahajan from Boston just tried donating and it failed, unfortunately. Jayesh bhai, keep trying. We can try with multiple cards if possible. Rajat Gupta from Bay Area just donated. Thank you so much, Rajat bhai, and all. Keep it coming, friends. Adesh bhai, we have Jashwant R. Mutiala from Arcadia, California. Uh, Sir, I'm interested to take an active role in Indian politics. What is your suggestion for me? Where do I start? I'm volunteering from US. However, would like to know if Delhi team can train me before I can go ahead and then work in my state. Thank you so much, for your intent and for the spirit. And you are you're more than welcome to come to India and work with any of us in the government or in the party, and try and understand how Aam Aadmi Party presents a different alternative to the politics that India has seen in the last 30, 40 years. And all I would say to you is that whatever and whenever you decide, do it with full commitment, whether it is you're able to give 1 hour in 1 month, or whether you're able to give 10 hours in one day. That decision will always be yours, but take a decision to which you can stick and do it with commitment. And you are more than welcome to come to Delhi and learn and see the model firsthand of how politics and government in Delhi has changed with the Aam Aadmi Party. And I hope you will able to take that example to your home state and do it there as well. Thank you. All right, we have Shravant Poreddy from South Plain, New Jersey. Okay. What is the agenda to transform AAP into a national party? So that's a difficult question. So as Arvind Kejriwal has said multiple times, we do not want to make major, big, ambitious plans as of now. Our first priority is providing good governance in Delhi and giving back to Delhiites what they could not get in the last 20, 25 years in terms of development. Second objective is to root out this cancer of corruption and drugs in Punjab and take Punjab to the highest level of development possible. And as and when the time, we will evaluate what we should do at a national level. All I can say is that you and I and all of us here support the Aam Aadmi Party a lot. And believe me, time is in our hands. No battle is won in a day. No revolution can happen in a year. And we will take time. I can only tell you an interesting bit of trivia for your information in any drawing room discussion that you have with your friends. The average age of a politician in the BJP is 65. The average age of a politician in the Congress is 69. The average age of a politician in the Aam Aadmi Party is 40. So we have a lot of time and we have a lot of patience. We will change the country for sure towards good. So keep your fingers crossed and keep helping us. Thank you.
All right, Adarsh, bhai, now we have Jayesh Kumar Mahajan. I think he tried another card and then it started Okay. working. Thank So you, Jayesh. thank you, Jayesh. And Raghavendra N from Cleveland, Ohio. With Sri Sri episode, Adarsh bhai, AAP is the one which dealt with the court. It is actually the one, it's actually the DDA that gave the permission and not the AAP government. Please ensure communication on the issues are streamlined. We are living in a microblogging world where twisting and tweaking happens and a lie travels faster than the truth. I agree with you totally. And believe me, we are always a victim of that. And, that's a challenge we keep fighting with. Unfortunately, thank you. You know that the media is not very supportive of us and does not paint the right picture. And thank you for saying that on a public platform, because I want to reiterate that in this whole controversy, the Aam Aadmi Party had really no role to play. The permissions were given by the government of India through DDA, and the environmental damage. So whatever environmental damage happened also happened, because instructed to the army by the government of India. Of course, there is great regard and great esteem for Sri Sri, but at the same time, Aam Aadmi Party believes that whatever has to be done, it should be done with the right intent, without without causing any damage to the ecosystem or the environment. All right, Adarsh, we have Vinod Kumar Pillai from Palatine, Illinois. Is AAP doing anything to curb population explosion? Since that is the main cause of all problems, including traffic, pollution, land prices, inflation, resource depletion. Probably we can give incentives for one child, one family policy or something like that. So, well, population is a problem in India, and of course, all of us from India, we know that. Today, we are a 1.2 billion people. Delhi alone is about 20 million people. Uh, you know, a constituency in Delhi, my constituency, for example, has 500,000 people. And there are many states in the US whose population is about a million. So I guess it is a challenge. We are working on it, but I think the problem has to be upstream and downstream both. Sometimes we only try and talk about uh, slowing the growth of population. We have to go back to the cause of population growth, which is, I feel, the right education and the right understanding which needs to be given to young people, so that they understand the implications of having large families and so on. And I think importance and priority which our government is giving to the education of the girl child, because as Mahatma Gandhi said, you educate a man and you make him a gentleman, but you educate a woman and you educate society. So I think it's important to educate women and keep giving focus and priority to their health and their education, so that this problem is controlled on its own. Thank you. All right, Adarsh, we have Akil Gada from San Jose, California. Have a suggestion in app to report garbage burning and polluting cars. How about giving the reporter 10% or so of the fine amount? This will encourage more people to report. That's an interesting suggestion. I mean, I don't see a challenge in that. I mean, my only concern would be how would we able to complete the circle? How would we be able to ensure that the money reaches? We don't have those kind of financial systems in India to ensure that the money reaches the person who raised the complaint and so on. But it's an interesting idea to incentivize people, for raising issues and complaints, and we will try and see how we can look at it. Thank you for your suggestion. All right, and we have Rajat Gupta from Bay Area. What is our plan to get the Jan Lokpal bill passed? How and when can we expect the progress report cards of our MLAs? Are all of them performing, or is there a way to warn or remove the non-performing ones? So, as far as the Jan Lokpal bill is concerned, I'm sure you must be aware that in the last session of the assembly, it had been passed by the government, by the assembly, by the elected members of the legislative assembly. That bill, along with 13 other critical bills, are pending at the office
office of the Lieutenant Governor, who is a nominee of the Narendra Modi-led BJP government at the center. And it is unfortunate that it is because of petty politics of the BJP that the people of Delhi are being kept away from these major landmark reforms, including Jan Lokpal. So we will continue to fight and protest for it and continue to keep pressure on the Lieutenant Governor and the Government of India to ensure that the bill is passed at the earliest. But in the meantime, I would like to inform you that because we believe that there would be a problem in getting the Jan Lokpal passed, we also introduced a charter of service bill in the Delhi Assembly, and that has basically empowered government officers to ensure that they meet timelines in terms of delivering their work. And not only that, they can be subject to harsh disciplinary action, including large fines, if they do not do their job in the stipulated time. So we have done that, but of course, the Jan Lokpal is going to be the biggest watershed in terms of accountability in government. And I think that we will continue to push the government of India to get it done. All right, we have Sukuman Paji from Dallas, Texas. Do we have experienced leaders in Punjab to handle all the ministries? So, well, I don't know what is the definition of experience. If experience means being in politics for 20 years like the Congress and the Akalis, then we are happy not having that kind of experience. And if lack of experience means making a mistake and then realizing you make a mistake and learning from it, then I'm happy to do those kind of mistakes. So I think, new people, young people, educated people, people from different backgrounds will be in Punjab, will fight elections in Punjab. And I am sure that they bringing the right intent into politics will ensure that governance is kept at the highest priority. Adarsh bhai, Santosh Adagula's card failed earlier. He tried another one, looks like, and we just see his donation coming by. Thank you, Santosh. Okay. Thank you, Santosh. Um, we have Paramjit Chahal Paji from Dallas, Texas, asking how can we control Akali and Congress agents entering into AAP of Punjab? So that's a very good question. आपका ये बड़ा अच्छा सवाल है और इस सवाल का मैं इंतजार कर रहा था और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है. आज पंजाब में जो राजनीतिक माहौल है उस माहौल में मौका परस्तों की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिस्ट की कमी नहीं है, जिनको ये नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है और इस समय आम आदमी पार्टी के माध्यम से वो लोग फिर सरकार में आ सके या फिर से चुने जा सके. इसके लिए आम आदमी पार्टी ने दो अलग अलग निर्णय लिए हैं. पहला ये लिया है कि कोई भी चुनाव के लिए टिकट के लिए अप्लाई अगर करता है तो उसको 3 टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे. पहला कैरेक्टर का, दूसरा क्रिमिनल बैकग्राउंड का और तीसरा करप्शन का. अगर वो तीनों में क्लियर होता है, करप्शन के लिए कोई केस, कोई एलिगेशन नहीं है, कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और साथ में कैरेक्टर से एकदम क्लीन है, तभी वो अप्लाई कर पाएगा. सेकेंड लेवल पे अगर वो ये सारे क्राइटेरिया मीट करेगा तो वहां की जिस विधानसभा के लिए, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वो टिकट के लिए अप्लाई करेगा, वहां के जो वॉलंटियर्स हैं बूथ लेवल से, यानी कि जो विलेज लेवल है वहां से लेकर के विधानसभा लेवल, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके ऊपर स्टेट लेवल, इन सब लेवल्स पे जो वहां के वॉलंटियर्स, जो जमीनी स्तर पे वहां है, जो ग्रास रूट लेवल पे वहां है, जो वहां की सिचुएशन जानते हैं, दिल्ली में बैठ के नहीं, जो वहां पे उस सिचुएशन को जानते हैं, वो लोग इन नामों के ऊपर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और उसके बाद इन नामों की लिस्ट जो है वेबसाइट पे लगाई जाएगी और आम जनता से राय ली जाएगी कि इसमें से किसी के खिलाफ कोई केस या कोई और समस्या तो नहीं है और उसके बाद ये टिकट उन लोगों को दिया जाएगा. तो उम्मीद हम लोग यही कर रहे हैं कि अधिकांश लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है साफ सुथरी छवि के होंगे और उस विचारधारा के होंगे जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से मिलती है. All right, perfect. Adarsh, we know have Sajjad Ahmad from Bay Area and also Sachin Khattar just donated to Aam Aadmi Party. Thank you so much, friends. Keep it coming. Thank you. And a few of them are having problems with the cards. We sincerely apologize for those problems. We'll work with the IT team to get this resolved. And few have used their Indian cards in order to do the donation. So, friends, I've noted this down. We'll ensure that this is rectified going forward. And
just now on WhatsApp, Rajat Gupta has again messaged saying that you missed the second question. How and when can we express the progress report cards Oh, of sir. MLAs? Yes. I'm sorry about that. So, working hard, and I'm not saying that because I am an MLA as well. I can tell you for a fact that after having worked for 17 and a half years in Vodafone, Samsung, and Apple, nothing prepared me for this kind of a job. I work 7 days a week for the last 1.5 years, and in my office on a daily basis, I have about 200 to 300 people walking in with their problems. I get about 150 people, and we try and address. And the biggest problem in Dwarka, which you may have heard of, was the lack of drinking water. And when we formed the government, I called the officials of the Jal board, which supply water, and meeting with the chief minister. And I was shocked to learn that the water supply for 25 years, 23 which water has to be supplied, does not need to be built because it has been built 12 years back. But after having been built 12 years back, that plant had not been made operational because the tanker mafia, the water tanker mafia used to control that. And there was approximately a 30 crore, which is approximately $5 million worth of bribe, which was being distributed among all the politicians and the government officials in those last 10, 12 years. We gave the deadline to the Jal board to make that plant operational in 90 days. In about 110 days, the plant was made operational. And today there is drinking water supplied in almost every home in Dwarka for the first time in 23 years. So like that, there are many examples. I have just given an example of Dwarka. There are many examples in many constituencies where work is happening. But at the same time, let me tell you that the expectations of the people are very large. And the expectations are large not because they are met. Earlier there used to be cynicism कि यहाँ तो कुछ काम होगा ही नहीं, पॉलिटिशियन से बात करने से, एमएलए से बात करने से क्या होगा, तो कोई बात ही नहीं करता था. अब लगता है काम हो सकता है तो लोग बात करते हैं, इसलिए उम्मीद है तो जिम्मेदारी है हम लोग की. तो इसलिए हम लोग ये हम लोग काम कर रहे हैं, एंड उम्मीद यही कर रहे हैं कि तेजी से काम हो रहा है. दिस चेंज इज हैपनिंग. वी आर ट्राइंग टू वर्क hard in our areas of development, but it is a long process. It will take time. 20-25 साल से जो रस्ट लगा हुआ है सिस्टम में, जंग लगा हुआ है सिस्टम में, वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल में शायद नहीं धुलेगा पूरा, धीरे धीरे साफ होगा. But I can assure you that with full commitment that work is going on, and we are hoping that if you go to Delhi now and talk to people, your friends or relatives in Delhi, they, I'm sure, would tell you about at least some changes which have happened. All right, Adarsh. Now we have Abhishek Dodda from Bay Area who has donated just now. Thank you, Abhishek, Thank you. for the donation. Friends, keep it coming. And Adarsh, we have Sanjeev Verma from Bay Area who has a question. But the interesting thing about Sanjeev Verma is before we started the T20 matches, he's already been on the ground hitting sixes and fours. He's not leaving the pitch. Okay. And he has again hit another century. So thank you very much, Santosh Paji. Great effort and great help. Thank you. And friends, keep it coming. And Santosh Bhai is like Sanjeev Bhai is even before we could prepare for it. He has great effort, Sanjeev Bhai. And Sanjeev Verma has a question. The party has got to involve overseas volunteers professionally in bringing innovation in governance. Many of us are professionals and is not interested in politics per se. However, our rich experience could be used in problem solving in an innovative manner. So thank you, Sanjeev, for bringing in that question. I think that's a super critical question. And in fact, none of us are career politicians. We are all professionals in that sense. So I think what is important is that, in Delhi and then onwards in Punjab, we are establishing an office, a group of people where we can get advice, suggestions, and proposals of various kind of things that we want to do.
So, for example, Delhi wants to come out with a new solar policy. Now, there could be many people here who have expertise in understanding the solar industry. There could be many people here who would know or who would have hardware which is connected to the solar industry. So they can come and talk to us, they can come and help us. Similarly for transport, similarly for education. And one of my roles, like I said, apart from being the window for technology for the state of Delhi and handling the information technology role, my role is also to ensure that if you have something, advice, suggestion, partnership of any sort which you want to bring to Delhi, bring it to my notice, and I can make sure that it is put to the right department where whether it's your advice or suggestion or partnership, it can be taken and looked at, and whichever best way possible can be worked together on. So we are very keen to welcome such options. All right, perfect. And we have Harijit Pandher from Houston. Many NRIs would love to take a break for about 6 months to 1 year and work for the party in Punjab. It happened during Delhi elections. What is the right way in which such volunteers will be systematically be used for the Punjab elections? Okay, so ideally, so of course, one is that if you are from Punjab, and you have family or friends back there, you may want to work in your own, maybe your home village or hometown, which is all fine. But if you don't want to do that, and you are willing to go to any place in Punjab, I think the best approach is going to be when the team here in the US is going to create a structure where you can register that you want to go, and then that team would then assign, after coordinating with our local team in Punjab and looking at the gap where we need what kind of people. Somewhere we need people to manage media, somewhere we need people to help in donations, somewhere we may need people to help in getting posters made, and so on and so forth. And example like that, there are many examples. So the requirements which come in from the Punjab team will be vetted by the US team here, and then there can be a right match found in terms of how much time and what you can do, and what the requirements are. And then the right platform would be for you to register and talk to them about volunteering, and they would then assign you a place, a responsibility, and a person to whom you could talk to and go back to. All right, Adarsh, thank you so much. And we have Satbir Brar from App, New Jersey, coming on WhatsApp. Srikanth asked this question to Adarsh. Whenever NRIs have any issues or questions, it takes too long to resolve because in Punjab, Durgesh Bhai Sanjay are very busy, and we have to go through so many channels before taking it. Please dedicate some people in Punjab to unresolve NRI volunteer issues promptly. So that's an important concern, and I agree with you. So we have gone step by step. The party unfortunately has not been able to give so much time in the past, to building the overseas NRI wing, and the reason has been that the party has in 3 years, actually 3 years is the age of the party, and in 3 years we have fought 3 elections. So we have been sort of busy with that, but now we are focusing on this, on exactly what you're saying. And there is now a dedicated ARP secretariat in Delhi which can answer your queries. Apart from that, there is, like I said earlier, there is a team which is being put in place at the national level, as well as at the zonal and city level, who you can talk to. And apart from that, there is a dedicated team in Punjab for NRI matters, which is being looked after by Jarnail Singh, who is one of our MLAs from Rajouri Garden, from Tilak Nagar. And through him, we will make sure that your questions or your doubts or your suggestions reach the concerned people in Punjab. Wonderful. And we have three more questions, Adarsh bhai, and Sure. two are questions, and one is a suggestion. Okay. And Rajesh Singh from Los Angeles. And Rajesh is the one who quit his job, took a break, came to Delhi, and then worked for about 7 or 8 months Okay. for the election. Okay. And he came back. We recently identified him. There are Okay. so many people I'm sure. in US Yeah. who are basically in a scenario where they would have worked really hard, and we don't know about them. But friends, please store this number 8722 AAP USA. It's very simple, 8722 AAP USA. Whenever you feel that there is a resonance, when you're talking with your friends, family, extended family around you who's interested in Aam Aadmi Party, just give them this number 8722 AAP USA and ask them to store this number, and then keep propagating it. 8722 AAP USA. Just one missed call, a team will basically reach out to them and then get them engaged in our activities in USA.
And Rajesh Singh from Los Angeles, Adarsh, has got a question. Since we have completed almost 3 years as a political party and 1 year as Delhi government, what are the checks and balances AAP has to ensure that it will not become like any other party? So, well, I think that's a very interesting question, and to be honest with you, I don't have ready-made answers for it. I agree with you that this is one of our biggest concerns. We are a new political party, and as Arvind himself put it, that it is very easy to talk about honesty when you don't have the opportunity. The real test of honesty lies when you remain honest. And that test is an ongoing, continuous test that everybody in Delhi or in Punjab is facing. And we try and make sure that we keep our eyes and ears to the ground so that we know what's happening at the ground level. We have a team of senior leaders in the party who make sure that they go across to various MLAs in various constituencies and talk to them and talk to the volunteers to find out what is happening at the ground level. That's at one level. The second is, of course, if there has been any case of corruption or malified intent at any point of time, the party has taken strict action, including sacking of a minister in front of a live press conference. So, but it remains an area of concern because it is not an easy path. I can give you an example about my own self. When I got elected, then the local officials of the MCD and few other departments came to my office in the constituency. I was not there. They met some of my volunteers and they asked them, those officials asked the volunteers, what would Mr. Adarsh Shastri like to do? So the volunteer said, what is the meaning of that question? What would he like to do? So then the official said that the previous MLA from here was honest. So he said, okay, how was he honest? Said he never asked us for any money. On our own, we used to go and give 12 lakh rupees every month. So that was the definition of honesty at that point of time. So, well, so you can understand. So, those are the challenges that most of the MLAs face, and I'm sure it could be a temptation for someone. So we keep doing a continuous system of check. Me and a few other MLAs I have been asked to visit 7, 8 MLAs every month and their constituencies and talk to their volunteers to find out what's happening at the ground level. And we try and keep that check and balance. And at the same time, of course, what binds us together is the common ideology of removing corruption from India. So I'm hoping that that continues to stay and we remain the only political party with a difference. Adarsh bhai, we crossed past 20 minutes beyond our schedule, and Okay. thank you so much for being here. And we have a couple more questions. Give Adarsh bhai a break. Score, please. That's what someone is. Maybe a couple lakhs. Maybe friends keep it coming. Some people are saying that their transactions failure. As I mentioned, we'll be correcting and rectifying it. We'll talk to the IT team and get that going. Sure. And we have one question and one suggestion. Vishal Kutchader from Los Angeles. He's been an RTI activist, NRA RTI activist who propagated that. I know him in Los Angeles. Okay. Why did AAP have to support Sri Ravi Shankar when we know that there are some environmental damage? So, like I said earlier, we were dealt with a pack of cards which we didn't know. The permissions had already been granted by the government of India, and out of regard for Shri, we felt that it may not be, the appropriate for us to interfere in that, especially when the permission granting is not in our control. The land doesn't belong to us. The land belongs to DDA, and they gave the permission. The structures which were built there were built by the army, which is not in our control, and we did not give those permissions. But yes, what we wanted to make sure was that there is least environmental damage, for which we ensured that our team of volunteers and the administration of Delhi works, and we ensured that the destruction to the environment or the damage to the environment was kept at its minimum. But at the same time, I think as a country, as a people, we need to objectively start thinking that where is it that we draw the line between mixing religion, ethics, politics, and governance. And I think there is a lot to learn from the countries in Europe and here in the US, and learn to know that religion does not give a license to do something which may not be right. So I think that's a call of maturity which will take some more years in India to reach.
and I think that's something that we are working on. All right, Adarsh bhai, we have Shikhar Singla from United States, and he just came by with a donation. And thank you so much, Shikhar Paji, Thank you. for all your help. And friends, keep it coming. Harpreet Singh, basically, let me check where Harpreet Singh is from. Harpreet Singh is from Antioch, California. And he's saying, sir, please make Punjab drug free. Maybe that's a good suggestion. Absolutely, that's our mission for Punjab. And Adarsh, we came to the end of these questions. And let me also reiterate that there is Mandeep, Sandhu. They didn't ask questions, but phenomenal people who are pledging their support for the party. We have Mandeep, Sandhu, Pulkit Gupta, as you know, Prabhat, Himanshu, Lakbir Bhai, Barinder, Arvinda, Teginamat, Ritesh, Pritam to Shyam, Rishi Agarwal, Mohammad Imran Khan, Harpreet Singh, Harbinder Kanwar, Gurvinder Singh, Jashwant Mutiala, Raghavendra N, Amarjit Singh, Harpinder Singh, Rishi Agarwal, Harjinder Bhai, Satbir, Chandra Indukuri, Avthar Dilan, Venkat Dabbara, Santosh Adagul, Ajinkya Patil, Sravant Poreddy, Barinder, Vinod Pillai, Rishi Agarwal, Akhil Gada, Jayesh Majan, Somu Kumar, Abhishek Dodda, Varun Gupta, Pradeep Sundarial Bhav, Himalay Majumdar, Gurudev, Sidhu Rajat, Bhagam Suki, Paramjit, Sanjeev Verma, Rajesh Singh, Vishal, and Harpreet Singh. Thank you so much for all your support. Excellent effort, friends. And as we all discussed earlier, keep it coming for the entire rest of the day. I know there are issues. We'll try sitting and then resolving this problem. And there's a good amount of culmination here. Adarsh, I want to tell you that phenomenal set of souls here also. We have all our friends here from the California teams. They're from multiple cities here. Stockton, we have Fresno, Yuba City. And let me tell you about a few of the cities that we visited recently. We visited to Stockton, we visited Fresno, we visited Sacramento, and other people. These volunteers have great passion and phenomenal people. And the way they've culminated people, which will be useful for all our friends who are listening to this Google Hangout, is they have a pattern. They've designed a mechanism where first they go identify a set of people, and then set up a table, a booth in different activities around the cities. And then once they have a culmination of 20, 30 people, they ask for a Google Hangout with some of our leaders. And we do have overseas.amadmiparty.org/AAP URLs where they go and then submit a request for Hangout. And once the Hangout request is put in, immediately the overseas team in Delhi, and million thanks to all our friends, Aniket, Preeti Sharma Menon, and personally you, Bhai, and Kumar Vishwas Bhai is in close loop and really going back and forth with them and getting these Hangouts ready. We did Hangouts with Supal Singh Khera. We did Hangout with Sucha Singh Chotepur, Durgesh Patak, and bunch of other leads from Punjab. And once the Hangout is happening, the cities are broadening up, and the leaders are answering their questions right people coming, and then huge difference. And thank you everyone, friends, and keep it coming. There are some questions that we have missed. There are certain things that would have fallen through the cracks. My apologies if we have done such things. And keep the mission going, and all throughout the day keep donating. And Vande Mataram, Jai Hind. Jai Hind. Thank you.